एक बार उनको बोल दो। ठीक है। Hi, good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. मॉर्निंग सर। Good morning, sir. 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 How many people are Morning, sir. joined? Hello? On YouTube? हेलो, YouTube पे कितने लोग हैं? ठीक है, leaders, please quickly tell all your teams to join on YouTube because email only. हर कोई ज्वाइन कर लिया ना? तो अभी कॉलिंग करके हटाते हैं सर दोनों लोग ठीक है। किसी दिन नहीं, वो ज्यादा टाइम नहीं है उसमें, जब आएगा वो। ओके, तो YouTube में कितने हैं? एक बार हम विश्व को भी बात करेंगे, इनकी कॉल आ रही है। म्यूट पे रहिए प्लीज, जो भी जितने भी गूगल मीट पे हैं वो म्यूट पे रहिए प्लीज। या टेल मी नाउ चरण, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। Okay, but please, where are my leaders? I need to check with them why people are not joining and waiting. Why only 300 people, 100 plus 200, when we have more than 600 people? When it was clearly written, it is mandatory. Let me put a message on the groups. I don't know. सर यहाँ अहमदाबाद में कुछ लोग ग्रुप में कनेक्टेड है। ठीक है, और भी जगह बोलिए। आप लोग एक ही सिस्टम से अलग अलग जगह पे कनेक्टेड है, मल्टीपल लोग। Neeraj is there? Charan? Neeraj is there? ठीक है, आप इसको किसी को बोल दीजिए ना, जो एक बंदा YouTube पे ज्वाइन कर ले, बोल के आप उनको एग्जिट कर दीजिए। Good morning, Rajesh sir. Good morning. Because let Neeraj also join, then we will start. चाय कैसी है धर्मेंद्र? चाय कैसी है? अच्छी है सर।
Good morning, sir. And Charan, you can always send me the YouTube attendance also, no, later. Okay, sure. सर कुछ लोग ना अटेंडेंस में दिख रहा होगा एक ही सिस्टम से कई लोग ज्वाइन हैं उस पे लिंक से भी हो तो करीब 400-500 लोग से ज्यादा होंगे ठीक है, गुड। तो मैं सिर्फ नीरज का वेट कर रहा हूँ बिकॉज अल्टीमेटली ही हैज टू लीड द सेशन। आई विल क्योंकि जगह नहीं मिली थी, जैसे मुझे नहीं मिला, मैं यूट्यूब पे गया था, फिर दोबारा किसी बच्चे के साथ लॉगिन। ठीक है, दैट्स ओके। चरण आ गया नीरज? नीरज और मुकेश को कर लो बस। ठीक है, नीरज यू आर देयर, मुकेश यू आर देयर? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, गुड। ठीक है, तो ग्रेट गाइस, गुड मॉर्निंग एंड प्लीज बी अटेंटिव एवरीबॉडी, ओके? It's a very important session and we will be doing these sessions on very important topics from time to time going forward, okay? First of all, I just give you the background, okay? That we have just closed H1 review at a national level. So it's a decent start to H1 for us, but now 5 months are remaining in annual operating plan. And these 5 months are always the biggest 5 months for any organization. Normally 60 to 65% of annual operating targets are done in these 5 months, okay? So this is very important 5 months for us. So why I'm saying this is also you need to understand that if we have to make big these 5 months, by only saying that we will make big, it will not happen, okay? Ultimately, we need to adopt the correct working style and the correct strategies and to bring a lot of changes in our working style, okay? From FLS perspective, today I will focus mainly from a FLS perspective, and definitely managers have to ensure that the most important things which comes to my mind are right KRAs, which is quantity of KRAs, then quality of a KRA, which helps you to generate right number of PGs and ultimately help you convert, and what data you are using, that's very important. OMS adoption, meta sheet on the first day of the contract. These are very important things from NC perspective in terms of revenue, in terms of growth, as well as in terms of early and right activation of the customer without any wrong commitments, okay? So if we talk about these things in this, the first 3 things, today we will be focusing mainly on quality of KRAs, that how we can improve the quality of our input matrices, okay? And in this series, we will talk about 3 topics. One is the lead score system, which data team has worked really good, and thanks to them, and they have implemented. And now we need to see how we use the lead score system, number 1. Number 2 is data team has been sharing a lot of mails, lot of insights, region-wise, national-wise, on high-performing data tags, which includes HL, SHL, GST, a lot of other tags, B2B, SHL, premium, free, whatever, e-appointments, whatever it comes, and that. And the third important thing, most important thing is, because the quality improves only by the quality of the presentation, for which tech team has worked really hard and implemented standardized presentation to the customers via insights.tradeindia.com, okay? So these 3 things we will be discussing today. Saturday we will be again having a webinar with Sushant, and I will also be part of it, and there we will be talking about OMS adoption and metasheet topic, okay? So that we will do on Saturday. Now, if I ask you very simply, okay, and write whatever you want to write for 2 minutes, okay? The people who are on Google Meet can write on Google Meet chat box, and the people who are on YouTube can write on the YouTube chat box. Anybody, any FLS, anybody, manager or whatever, what do you think that what is the most important thing in NC to be successful?
Please just write whatever comes to your mind. What is the most important thing to be successful in NC vertical for any FLS or any executive to do good? Please write whatever it thinks to you. Online, are people writing? Please, people write, na guys, on YouTube as well as Google Meet. What do you think is the most important thing in NC to be successful? Okay, good source with quality lead, right data, maximum attempt VDMU, maximum working in right data, quality data, data management, reach out more clients, good communication, maximum data attempt, maximum fresh attempt on right data, right? This is I'm listening on the Google Meet. उस पे भी नहीं आ रहा क्या? अच्छा आया, उस पे भी लिख रहे हैं आप. Data reach to maximum client, productive, more meetings. We have to do so many meetings, creative workings, meetings, data mining. Right, good. Okay, fine. Because I need someone to be writing this. Okay, now you have right. Everybody has बीच में I will use Hindi, but mostly I will use English. Don't worry, the South teams and wherever who have joined. Okay, you have said it right. Okay, but so बिल्कुल right है. NC में सबसे important क्या है? NC is all about digging the hole every day. Every day you need to dig a new hole. When I say that, what does it mean? You need to find out, you need to reach out more and more customers, right? Number one. And when I say more and more customers, it means more and more attempts, more and more calling, and more, most important, meetings. But in this meeting, you please add, this you are trying to do, but we have to reach more and more fresh customers, which means fresh meetings. But what we are doing is right now is we are reaching, most of the people are trying to reach out to more and more follow-ups only. So 3 fresh meetings in field sales and 5 fresh meetings in telesales is must, because that will only create a pool for you and you will be dependent upon 1 or 2 PGs, right? Okay. जब आप कॉल करते हो, ज्यादा लोगों को कॉल करते हो, तो आपका कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, यू कांट डू एनीथिंग. बट आपका कॉल कनेक्ट होता है, देन व्हाट यू डू. चलो एक चीज पूछता हूं पहले, आप कॉल करते किस लिए हो? फ्रेश मीटिंग करते किस लिए हो? प्लीज राइट. Why we are saying that you are reaching out to more and more customers, more and more fresh customers? For what? Please write, anybody on the chat groups. Why are you doing so many calling and so many meetings? Guys, write. Now, when I say please write, all be in the meeting. I'm still waiting. 300 FLS and nobody is writing. Why? Right, to create more funnel for prospective meetings, new PG. Right. You have finally said right. We are doing so because sales के लिए नहीं करते. Sales बाद में आता है. You are reaching out to more and more customers and doing more and more fresh meetings as a first step to create what? More and more PGs. Okay. But when a customer is connected on a call or customer has given you a field meeting and you are able to reach that meeting and the customer is ready to meet you, in that what happens? What we do? We do a sales presentation. If that presentation itself is not right, then even if you are doing more and more calling, even if you are doing more and more meetings, then also you will fail. Because ultimate purpose is to generate a prospect, and prospect will get generated by right sales presentation. And if you are more prospects, then automatically revenue has to come. There is no other way that revenue will not come, because the market is so big, the market is not penetrated. Around 90% of our segment is still not online. So there is no reason, and everybody knows that online is the future. Okay? So quantity, we just talked about one thing, that please ensure that we ensure, if you're in tele model, ensure 90 to 100 calling, 5 fresh meetings, 5 fresh tele DMUs. And if you are in the field mode, you ensure bare minimum 40 to 50 calling, because only then you will get appointments, and ensure 3 fresh meetings. Okay. Now, to improve the quality means to increase more and more PGs and ensuring that PGs should get convert. What you do is all the 3 things we will be discussing right now.
आपने 100 कॉलिंग तो कर लिया, बट आप 100 कॉलिंग, you are calling blindly. We have given you all the efficient data, but you are still doing data mining. I don't know why. Neeraj will tell you why. Because we don't need to we don't even understand till now that why we are doing data mining. If you have finished all the data, efficient data provided by Trade India to you, after that you are allowed to do data mining, not before that. As simple as that. ठीक है ना? तो anyways, so the first I will क्या कहते हैं, we will take questions also if required, and so we will give you क्या कहते हैं, I will give the chance to Neeraj and Mukesh, supported by Mukesh, to go through whatever we want to present today. We will be crisp, okay, and I will keep adding in between wherever required. ठीक है? Sure, sir. Sure, sir. Good morning, guys. I hope I'm audible to everyone, loud and clear. I'll share as like Rajiv sir said, we will discuss only 3 topics here, and these are all related to getting customer faster. You are getting customer. We are trying to work towards getting customer faster for you.
That's not an issue, but हो रहा है ना, बस ये check कर लो. नहीं हो रहा, ब्लैंक आ रहा है वहां पे. अच्छा, हो गया, done. So guys, on the people who are on YouTube, can you just now you are able to see the screen and voice? Please just say thumbs up on YouTube chat. Yeah, good. ठीक है, चलो, ठीक है नीरज. Great. So, Thanks, like I said, we discussed with Rajiv sir this morning. We are taking on three pointers here, three shortcuts. One is lead score, second is high performing leads, and third one is sales presentation. Right. So let's go to lead score. What is lead score? So basically, the lead score has been generated basis 5 pointers. 5 pointers and score between 0 to 100. Now those 5 pointers are sales activity. What in every profile, what kind of sales activity is getting happen? You know, like on every profile, you make meetings, you make dispositions of PGs, video calls, purchase intent, proposals, you send proposals. So basis how many meetings have happened with that profile, how many PGs have been generated by not you for last 1 year, the entire year, we have given score on a profile. So one is activity, second is customer activity. So what is customer activity? So we have traced the kind of activity that particular profile customer of that profile is doing with us on our platform, both on web and on app. So we are tracking as to whether he opens his MTI panel, whether he comes and searches for some product, whether he raises some requests. So a lot of activities, and every activity again has been given some pointer plus or minus, both. So if suppose someone has gone and unsubscribed our emails, that means he is not interested on our mails, marketing mails. So why call them up right now? So we have given them minus marking as well. So one is sales activity. Second, I said, was customer activity. Third is data knowledge. So we heard from you all that the data with GST number available in the profile performs much better, or the data where the NOB has manufacturer or kind of a reseller performs better, So we have taken all data points, all in the data knowledge, we call them data knowledge, and we started giving them a mark. So if a profile has a GST, a profile has category, profile has website, we know the website traffic it is generating, we know whether that profile customer has downloaded our app. So basis every detail which we have in that particular profile, we have given them some score. Fourth is data tags. You know that we keep on adding hot leads and super hot leads in every data throughout the year. These tags are added for that month for 15 days only. But if suppose there is a profile called Rajiv Enterprises, and that in last 1 year, there are 5 different times when that Rajiv Enterprises was tagged as SHL or HL. Now, if I tag that customer today as a hot lead, it will remain only for 15 days. And on 16th day, we will forget about Rajiv Enterprises saying that particular lead is not being tagged as hot lead or super hot lead. But just imagine that Rajiv Enterprises was tagged 6 times during the last 1 year. We are not considering that. We are just considering whether that particular profile is hot lead this month or not. So we have incorporated those also, that if a particular profile has been tagged hot lead or super hot lead in last 12 months, how many times it was tagged, and basis the number of time it was tagged, we have given them a score.
And last but not the least, like Rajiv sir just said, that you stop mining data unless you utilize all the data which you have. Why do you go and mine data? We have talked to so many salespeople. We understood why they go and mine data. They mine data to check whether a particular company is available on some other competitor, some other B2B platform, so that they understand that as an FLS, I will know that, okay, Neeraj Enterprises is available on, suppose, Exporters India or India Mart. That means that particular company is well aware on digital presence, right? Yeah. And that helps you to talk to them. And that is why you go and search for those companies. You create a data in the system, in Trade India system, and then you start calling. We said, let's get into that picture and help you out with mining those data from the back end and giving it to you. So we searched on 7 websites, and we are still searching on multiple websites. And we found which particular company is available on competitor websites, whether they are available on top of the state listing search, whether they are available on top of the city search, whether they are available on top of the category search, whether they are available on top of the keyword search, because all this information gives us a picture that this particular company is high paying on my competitor website. This particular company is a free lister on my competitor website, right? Yeah, I just want to interrupt here. Okay, मेरा आवाज आ रहा है, guys? Yeah. So guys, first of all, Bhishma, you're there, I think. Bhishma is there, I think. हाँ हूँ मैं. Yes. पर आप ऑनलाइन आ जाना. Just want to use you. पहले मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ. Guys, first of all, you all need to understand. क्या हम किसी भी डेटा का, किसी भी लीड का, किसी भी डेटा पॉइंट का ये सब चेक कर सकते हैं खुद से कि सेल्स उस पे क्या एक्टिविटी किया है, कस्टमर उस पे क्या एक्टिविटी किया है ट्रेड इंडिया के साथ, उसके वेरिएबल्स क्या है, जीएसटी, कैटेगरी, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप डाउनलोड, डेटा टैग्स जो हम अपने आप बनाते रहते हैं वो उनमें आता है नहीं आता, डिजिटल प्रेजेंस उसकी कंपटीशन पे क्या है. गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस रिक्वायर्स ओनली अ सिस्टम एंड अ मशीन कैन डू दिस. Nobody can do this, number one. Number two, but the problem where it happens, we are dealing with lakhs of data in a month. And the problem is, whenever we launch certain things, we are open to hear you for improvements. You can share your improvement data to data team. But the point is, people say, sir, iska lead score 30 hai, ye to 30 ho hi nahi sakta. इसका लीड स्कोर 70 कैसे हो सकता है सर, ये तो ऐसा निकला, इसने तो बोला मैं रिटेल से काम कर रहा हूं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. नीरज, आप ये चीज नहीं बोलते हो, लेकिन आपको ये चीज बोलनी पड़ेगी, बिकॉज देन ऑब्जेक्शन विल बी किल्ड. बिकॉज गाइस, whenever we are doing anything, whenever we are creating even HL or SHL, anything, there will be a 15% error probability. The purpose is that the probability of you working in the right data increases. That we can tell you with guarantee. But it doesn't mean that every data will be tagged the way it has to be tagged. भीष्मा, अब मैं को बताओ, बट भीष्मा, अब मैं आपसे पूछ रहा था, बताओ, मतलब ये सारा डेटा जब चेक हो रहा है, इतने वेरिएबल्स चेक हो रहे हैं अब लीड स्कोर में, कोई कर सकता है अकेला सेल प्रेजेंटेशन, एफएलएस या टीम लीडर? जितनी चीजें मशीन ने हमें बना के दी है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है. जितनी चीजें मशीन ने बना के दी है ना, उतनी अगर एक एक डेटा पे हम हमारा प्री कॉल प्रिपरेशन करने बैठेंगे ना, तो एक एक 1.5 घंटा लग जाएगा एक एक प्रोफाइल में इतनी चीज निकालने में. प्रोफाइल को चेक करने के लिए. हाँ, एक प्रोफाइल को चेक करने में तो दिन भर में आप 8-10 प्रोफाइल भी नहीं चेक कर सकते, जबकि वो मशीन ने आपको बना के दी है क्वांटिटी में भर भर के. तो ज्यादा यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं, ज्यादा दिमाग लगाने वाली सब्जेक्ट है ही नहीं. डेटा में सारा केवाईसी दिया है, क्या क्यों हॉट लीड है, क्यों सुपर हॉट लीड है, क्या क्या चीजें, और लीड स्कोर भी दे दिए हैं. तो ज्यादा उसमें सोचने की जगह पे वो डेटा को उस नजरिए से देख के उस पर तुरंत काम कर लेना चाहिए क्वांटिटी. या सो बस मैं इसलिए कॉमन हम करने लगे हैं अभी, क्या है कि इनमें लास्ट तक ये मैसेज नहीं जा रहा है. लोग बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हैं कि जब इतना काम हो रहा है टेक लेवल पे, डेटा लेवल पे, हम ब्लाइंडली क्यों नहीं ट्रस्ट करते. और एक बार मेरा संदीप सर से भी बात हुआ था परसों, अगर कोई वर्ड डेटा माइनिंग यूज करता है, भैया करो, जो हमने बोला है ना पहले वो खत्म करो.
Simple. As simple as that. Whatever organization is saying it, first complete that. Then you are free. Do it. ठीक है ना? तो anyways, अभी जब लीड स्कोर का ये बताएंगे, इसके अंदर मैं एक चीज और बताऊंगा. नीरज, you are also telling क्या कहते हैं लीड स्कोर वाइज काउंट तो नहीं बता रहे ना? नहीं, काउंट नहीं बता रहे. हाँ ठीक है, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा. तो पहले आप लीड स्कोर वाइज आगे लीड स्कोर में क्या है नेक्स्ट स्लाइड आपका? So the next slide is ये दिखा दो, फिर मैं बात करूंगा. ठीक है. how will you go चलेंगे ahead? थोड़ा फास्ट ही नीरज, ठीक है? टॉपिक्स 3-4 है क्योंकि, ठीक है. So next slide, what we wanted to tell you is how will you find out what is the lead score? हमने lead score तो डाल दिया, but how will you find out what is the lead score? And how will you go and search in your screen if you have 50 good high score data available with you? So you do not have to do anything. Everything is sorted for you. One, these are not hot leads. These are not marked as hot leads or super hot leads. So we are not allocating this data to you. Responsibility of allocating more or getting more data is of the person, is of the manager of the person. You know, you have to go on the system, filter the data basis 5 parameters, five pointers given there, like 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100. ये सर्च में आ गया है नीरज? ये सर्च में आता है, मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में. हाँ दिखा देना, ठीक है. हाँ मैं दिखा दूंगा once we complete this slide. And then whatever number of data you have, that will come already filtered and sorted in high to low order. Now here, if you see in this particular picture, first record has 50 score, second record has 50 score, and third record is 62. But I said it will be sorted. First and second are SHL and SHL data. So the sorting happens like all SHL will come on top, then HL, whatever their score is, and then all non-hot lead data will come sorted by the This is such a great thing now. What we are saying is the leads. What he is saying is, I'm just trying to repeat it for managers also. Please understand what they are saying is SHL and HL allocation happens through us, right? But lead score based data we are not assigning. It's the responsibility of the FLS and the managers to get the data, right? And the Mukesh and Neeraj. But once they get the data once they fetch the lead score data, first priority will be SHL. Second will be HL, and after that, whatever data is left in that, you will get lead score with the top lead score at top and the bottom lead score at the bottom in a descending order. आपका काम करके दे रहे हैं वहां पे. सब कुछ करके दे रहे हैं. Now just see this screen here. I just said you go ahead and filter the data, choose the data, put in your branch, put in your name, and basis lead score, you can go search the data and allocate to yourself or to the leader, to the team. Right? Balu, एक minute, just hold on. Balu Phule, you want to ask something? Who? Somebody has raised the hand. Balu. Maybe by default. Balu? सर शांति बात कर रहा हूँ. मेरा एक क्वेश्चन था. हम लोग ये वेबसाइट पे तो देख सकते हैं सारा डिटेल्स, बट यूजुअली जब हम साइट पे होते हैं तो मोबाइल यूज करते हैं ज्यादा, और इवन कॉलिंग के लिए भी जो प्रेफर होता है वो मोबाइल का SFA ऐप होता है, लेकिन उसमें वो डेटा का प्रायोरिटी नहीं आता है. जो फिल्टर आप बोल रहे कि जिसका स्कोर ज्यादा है वो फर्स्ट पे आना चाहिए. अगर वो इम्प्लीमेंट ऐप पे होगा, दैट इज इजी फॉर अस. जस्ट सजेशन. ठीक है, that's okay. There will be points, but right now because Mukesh and Neeraj, let's not handle questions right now. Okay, just take questions. Okay, Mukesh, let us check. ठीक है कि how can they get this data? क्या कहते हैं, filtration through mobile app. ठीक है, just keep right this. ठीक है. So ठीक है, thanks. Yeah. Okay. To continue, once you sort and select data, allocate to yourself. Now this particular person will see all the data sorted here. You can see 84, 70, 63, 61, and it is going down. So the best lead is always on top. Okay. This is how you will see your screen.
once you log in every morning, this is how you will see your screen, all SHL on top, then HL, and then non-hot lead sorted in lead score basis. Yeah. Clear? So now, another one thing, guys, because another questions will crop up, because whenever we launch something, you will keep finding the data of lead scores of say 90 or 85. Okay, Neeraj, samajh rahe aap? You will keep start finding the data only for 85 and 90, and then you will come to us, sir, usme to data hi nahi hai. You need to understand these are lakhs of data. It doesn't mean that you have to work only on 90 data. We are saying whatever is the top lead score data you have to work upon. According to me, the major data you will get will between I think 30 to 60 or 25 to 60, right, Neeraj? 30 to 60. 30 to 60. 30 to 60. That's a good lead score only. And very high performing data, sir. Very high performance data. Yeah. Okay, I'm just telling you that. So this is also non-hot lead allocation system. Also, you can go and search here lead score and So we have implemented already. allocate. So you want all leads above 40 allocated to yourself. Just click on all leads above 40 and allocate it to yourself, right? Basis state and city. Okay. Mansoor, you are there? Mansoor is not on the, kya kehte hain, I think, Mansoor is on YouTube, I think. Just hold on, let me see. Kanagraj, you are there? Kanagraj? Yes, sir. You just mute Kanagraj. Neeraj Chaurasia. Neeraj is on G-Week. I want to ask her. Just right, sir. Neeraj, you can mute her. Just mute her. I will ask later. Neeraj? Yes, sir. I'm there. Neeraj, I just want to ask, be honest to me and tell me, do you know, अभी तक आपको ये पता था कि लीड स्कोर बेसिस पे आप डाटा एलोकेट कैसे कर सकते हो और कहां से कर सकते हो? सर जो लीड का जो उसमें एक ऑप्शन था ना कि कितने ऊपर का जो परसेंटेज हाई स्कोर सिलेक्ट करके लेना है, वो मुझे नहीं पता था, इसमें मुझे पता था. हमें यही बोल नहीं पता था ना, दैट्स व्हाई मैंने बोला है ना, तभी दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग्स. ओके Yes. राहुल, बस ठीक है, मुझे यही कोई बात नहीं पता था, व्हिच इज ओके. 4 अकाउंट भी लॉन्च हुए, फिल्टर कर सकता हूँ, कितना स्कोर वाइज में डेटा एलोकेट कर सकता हूँ. ये आपको पता था कि लीड स्कोर बाय डिफॉल्ट एफएलएस के सिस्टम में टॉप टू बॉटम दिखता है. पहले एसएचएल दिखता है, फिर एचएल दिखता है, उसके बाद फिर टॉप टू बॉटम दिखता है. राहुल नरूला, आपने हैंड रेज किया, बताइए. नीरज सर, मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे. यहाँ पे जब हम ये वाला डेटा जब हम मॉर्निंग में हम एलोकेट करते हैं तो वहाँ पर एक लिमिटेशन देता है, तो उसका कोई फिक्स नंबर आप लोग ने डिसाइड किया हुआ है? We have communicated it is only 25. You can keep not open. 25. Yeah. और सर You एक utilize those data and take more. Okay. अब जिसके पास 25 नहीं भी होता है वहां भी लिख के आता है ऑलरेडी अवेलेबल. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. हम लोग, आप ऐसा कोई केस होगा तो बता दीजिएगा, हम टेक से बात कर लेंगे. ऐसा होना नहीं. तो इसमें 25 इज द मैक्सिमम लिमिट? नहीं, मैक्सिमम है एक बारी में. आप खाली कर लो, उसके बाद दोबारा ले लो 25. बिल्कुल. ओके. और ये हम दिन में कितनी बार भी दे सकते हैं? जितनी बार आपकी मर्जी. मतलब इसके लिए जैसे एचएल का एक टाइम है ना कि हम इतने बजे से इतने बजे तक दे सकते हैं. These are not HL, sir. Rahul, these are not HL. These are general data with a lead score. एक मिनट के लिए मैं अब और राजेश सर, एक सेकंड स्पेंसर, जस्ट आई विल लिसन टू यू, बट मैं आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग वन पॉइंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ इट्स अ एचएल और एसएचएल, देन आल्सो वी हैव गिवन द लीड स्कोर. बट राहुल सर, राजेश सर, मैं अदरवाइज दीस आर नॉट एचएल्स एंड एस. यार एक टाइम में एक बार, अभी पहले स्पेंसर क्यों में है ना, स्पेंसर आस्क द क्वेश्चन. No, not questions, sir. We will complete the presentation completely. Then we will ask questions, sir. No, it becomes tough, Spencer. It becomes tough because we have to go back to that screen. Then you got the point. I have one question, sir. सर मेरे पास एक क्वेश्चन है. सर क्वेश्चन ये है कि जैसे राहुल सर ने बोला अभी कि 40 की एवब जितने भी लीड स्कोर है हम लोग उसको ट्रांसफर नहीं कर पाते, वो 40 के नीचे ही हम लोग ट्रांसफर कर पाते हैं. अच्छी बात है, करो ना. नहीं है. मैंने आपको अभी क्या बोला था, यू डोंट थिंक कि है या नहीं डेटा. 40 के नीचे का करो, नो इश्यूज. 40 के नीचे ही एलोकेट होता है. अगर नहीं है डेटा तो मत करो. डोंट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, डोंट कम इनटू दैट. एक सेकेंड सर, इसमें जो उन्होंने बोला ना कि लीड जो 40 के ऊपर का है, ऐसा नहीं. अगर सामने वाला एफएलएस के पास लीड बैंक खाली है ना, कल मैंने 98 डेटा भी एलोकेट किया हुआ है और वो गया है. सारा 50 एंड अबव ही था.
राइट? ये मतलब ये कि यूटिलाइजेशन के ऊपर है कि यूटिलाइज हम लोग कर रहे हैं। Guys, just hold on. I am answering because that's why I know मैं डेटा टीम के साथ मैं खुद क्यों आया because नो तुम्हारे सेल्स के आंसर क्या होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस क्या होंगे, तभी मैं बोल रहा हूँ which is right questions, ठीक है। राजीव म्यूट कर दो। पहली बात डेटा होगा, पहली बात डेटा वेरी करेगा लोकेशन टू लोकेशन, डेटा काउंट विल वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, sometimes it will be there, sometimes it will not be there, and if it's not there doesn't matter ना, do less than 40 ना, but that वहां पे भी तो डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, पहले 39 यूज करो, फिर 38 यूज करो, फिर 35 यूज करो, फिर हम क्या कह रहे हैं आपको, हम वी हैव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, यू गॉट द पॉइंट, राइट? राजू सर, मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन है अभी, बिकॉज एक लेवल के बाद नहीं। हाँ मुकेश सर मेरे सामने है, 2 बार मेरे साथ एक चैलेंजेस फेस हुआ। मैं मॉर्निंग पे आके सभी को डेटा दे देता हूँ और सभी के पास लीड स्कोर के 25 डेटा है। मुकेश सर से मैंने एक अप्रूवल लिया था, तो मैंने बोला कि मेरे को एलोकेट कर दो, मेरा 25 का बकेट पूरा था, मैंने बोला सोनल को दे दो, सोनल का भी बकेट पूरा था, मैंने बोला प्रीति को दे दो। तो मुकेश सर ने ये मेरे को सजेशन दिया कि एक बार आप मैनेजमेंट से ये बात रखिए कि ये जो ब्रैकेट है, मुकेश सर आप हैं इस सिस्टम पे? हाँ, तो ये जो चैलेंजेस आ रहा था, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसका सोल्यूशन भी मैंने दिया था, अगर 25 स्कोर से ज्यादा डेटा है तो उसको यूज कर लीजिए, ये मैंने कहा। उसमें भी एक चीज और है सर, यदि वो डेटा फॉलो अप पे पड़ा है वो भी काउंट हो रहा, सिर्फ वो नॉट ओपन का काउंट नहीं हो रहा। नॉट ओपन का काउंट नहीं गलत है, जो अगर फॉलो अप में पड़ा है अर्पित काउंट सिर्फ नॉट ओपन का हो रहा है, और अगर ऐसा इशू है तो अगेन वो नेशनल कॉल्स पे नहीं होगा, आप भेजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, विल वर्क विद द टेक टीम ऑन दैट। ठीक है सर, ठीक है ना सर। एक राजीव सर एक छोटा सा ये दे रहे हैं हम लोग, 25 देने का मतलब है 25 का लिमिट लगाने का कि वी डू नॉट वांट ऑल गुड डेटा टू बी लाइंग इन वन पर्सन्स बकेट, यू नो। आइडिया है कि यू टेक 25 डेटा, यूज इट, put it, remove it from not open, and you go and take more data if it is available, right? But don't take all the data and don't stop calling. Okay, and last one thing, like guys, इतने क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे because अभी बहुत लंबे टॉपिक्स बचे हैं, ठीक है, try to understand, we will do it again, don't worry. पहली बात, नंबर एक, अभी जो स्क्रीन ओपन है उस पे आप एक चीज देख पा रहे हैं, राहुल नरूला आप हैं? यस सर, मैं हूँ। देखिए, मैं तभी बोल रहा हूँ कि अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, उसका रीजन बताता हूँ कैसे। अभी जो स्क्रीन ओपन है इसमें एक एसएचएल पड़ी है ऊपर, हमने बोला ये डेटा हम एलोकेट नहीं करते, हम एलोकेट एसएचएल या एचएल ही करते हैं, राइट? बट उसका लीड स्कोर बता दिया हमने, उस एसएचएल का लीड स्कोर क्या है? 50। लेकिन उसके नीचे एक डेटा है जो एसएचएल नहीं है, और उसका लीड स्कोर क्या है? 62। तो प्लीज अब आप ये मत बोलिए, जबकि हमने बोला एसएचएल आप पहले यूज करोगे। जो टेक्नोलॉजी बनती है ना, वो सारी चीजों को वो नहीं कर पाती, तो कहने को वो एसएचएल है बट इसका लीड स्कोर 62 है, आप समझ रहे हो? आप नीरज सर, इसमें यही होगा ना कि जो एसएचएल की कैप है, अगर फॉर एग्जांपल 200 की या व्हाटएवर, पर इसकी कैप है 25 की, 40 से ऊपर लीड स्कोर की, तो और वो एसएचएल ही है, ऑलमोस्ट आप समझो कि लीड स्कोर जिसका 50 ऊपर है और वो एसएचएल ही है, तो फिर एसएचएल भी 25 ही जाएगी, ये होगा ना? नहीं, फर्क क्या है भीष्मा, मैं बताता हूँ। अब एक रिकॉर्ड जैसे राजीव सर ने बताया कि नॉन एचएल है 62 स्कोर है, और एक एसएचएल है जिसका स्कोर 50 है। दोनों में एसएचएल ऊपर रखने का रीजन क्यों है कि वो 50 स्कोर वाला बंदा कल और आज के दिन में एक्टिव है। नहीं, मैं समझ गया, मेरी क्वेरी सिर्फ ये। नीरज भीष्मा रुक जाओ, मैं वो पॉइंट नहीं है, भीष्मा का जो क्वेश्चन है ना नीरज, लास्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और बात कर लेंगे। भीष्मा का क्वेश्चन कुछ और है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि चांसेस हैं कि एसएचएल और एचएल का स्कोर 40 से ऊपर ही होगा, चांसेस हैं, राइट? नाउ नहीं, व्हाट ही इज सेइंग इज, और एचएल और एसएचएल की भी एक लिमिट है, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने 25 की लिमिट रख दी तो वो वैसे भी 40 से ऊपर वाला नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके बाद एसएचएल और एसएचएल में नॉट ओपन पड़ी ही रहती है 25 तो। और मेरा दूसरा पॉइंट ये भी है कि एसएचएल भी कम आ जाएगी ना फिर, तो रोज की क्वांटिटी उसके पास। एचएल और एसएचएल में लीड स्कोर का 25 वाला कंडीशन नहीं है। अरे मुकेश, आप समझे नहीं, कंडीशन डेटा तो एक ही है ना हमारे लिए। अगर एक्स डेटा है तो एक्स डेटा एसएचएल है, एक्स डेटा का लीड स्कोर एक्स है, तो वो तो डेटा तो एक ही हुआ ना। वो डेटा
अलोकेशन के टाइम पे अलग अलग थोड़ी ना हो जाएगा। डेटा एक ही वाली डेटा हॉट लीड हुआ ना, हॉट लीड और सुपर हॉट लीड में लीड स्कोर का 25 वाला कंडीशन नहीं है, इसमें वही कंडीशन है जो एचएल और एसएचएल में था। मुकेश मेरा पॉइंट आप सब, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझो, मैं डेटा लीड स्कोर वाया लीड स्कोर थ्रू दूंगा तो 25 से ऊपर नहीं जाएगा, पर वाया एसएचएल दूंगा तो 25 से ऊपर जाएगा। हाउएवर देयर स्कोर इज मोर देन 40, ऐसा नहीं हो सकता। मे बी आप एक बार चेक कर लेना, मैं जो बोल रहा हूँ बाद में या तो कॉल पे बात कर लेंगे इसको, बाद में कॉल पे बात कर लेंगे बीच में आपको। या we will find out and check, एक बार सिनेरियोस बनाने पड़ेंगे, we will check it out, ठीक है। Okay, so going to the next slide, this is the higher the score, the better the lead, and this has been proven in last 2 months. So idea was कि हम लोगों ने we put in those scores, whether those scores are actually performing or those scores are kind of misleading. Okay, so we tracked that and we found in September and October, if you see here, all score from 0 to 100 is going here, you know. And if you look at the conversion in September and in October, या बस ज्यादा नहीं बताना नीरज, बिकॉज थोड़ा सा समझ आ गया मेरे को, इनको टेबल ही बताना है, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ इनसे सवाल है, सॉरी मैं बीच बीच में कट किया करूंगा आपको, बिकॉज ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि हमें 11:30 तो मैक्सिमम खत्म करना है। गाइस मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है, स्पेंसर यू आर देयर? I purposefully call one and one. I forget Rajiv Goyal, what he's saying. Forget Neeraj Pandey, what he's saying. Forget Zille and Sandeep sir, what he's saying. Right? Yes. This first data team has created a lead score. We already said you there will be 20% error. Please don't send us mails, number one. But there are genuine issues, जैसे दिबीशमा ने बताया किसी ऐप में कैसे सर्च करना है. We will look it into it and work on it. After that they validated that whatever lead score they have made for good, what is the conversion percentage? Now this is telling your conversion percentage difference from 0.14% to 1.88%. Guys, this is not PG percentage. This is lead to conversion percentage. Are you understanding it? Right, Neeraj? Yes. This is lead to conversion percentage. Now, is there any logic that one should not follow this? This is your data working. Is there any logic that one should not follow this? No. Definitely they need to follow because the result is showing on this data. Yeah. And this is your data working only, right? So this is the message to all guys. Please work blindly. Okay? Yeah, go ahead, Neeraj. What I just wanted to point one important thing is whatever the number of data we have, okay, less, more on higher score data, just look at the number of data we left unused in October. There's an unused lead bucket, lead number. So if we would have used this, the number would have been different. Okay, so let's utilize at least all those data, high score data. Now going to the next point, which is high performing leads. ये छोटा सा ही है because we have been telling this again. This is just one slide. So we tracked as to which particular data is performing. We have been giving you SHL, HL, you know, other data. So which data has performed in last 6 months. So this is a snapshot for you to just to understand and comprehend. Super hot lead gives us 0.68% conversion, lead to conversion. Hot lead gives us 0.36%. B2B Regis SHL Premium. I hope all of you are using it. It is 0.81%. Now compare this with general data, which is 0.20%. Okay. So B2B Regis, if you have B2B Regis SHL Premium, please utilize those record. Okay, now one second, I stop you. And Bhishma, because आपको एक Excel खोलना पड़ेगा और मेरे साथ एक बार टीम को समझाते हैं आप लोगों को ये डेटा समझ नहीं आता, इसलिए मैं बताता हूँ कईयों को। बता भीष्मा है क्या आप? हाँ, यस। अब एक चीज भीष्मा, हॉट ये 6 महीने का डेटा है. दिस इज 6 months data, नीरज. April to September. I tell you how much revenue we have missed. All my direct leaders and senior leaders. Hot leads में डेटा अनयूज कितना है? हॉट लीड्स में अनयूज 3,58,000. लिखो अपने एक्सेल में, ठीक है? एक सेकंड. राइट. अब
3,58,700 अच्छा, अगर अब जनरल डेटा का कन्वर्जन परसेंटेज कितना है? जनरल, एक सेकंड में 0.2%, राइट? हाँ, 0.2%। हॉटलीड का कन्वर्जन परसेंटेज कितना है? 6 महीने का कुमुलेटिव है ये। 0.36। डिफरेंस कितना हुआ? 0.16%। ठीक है, अब 3,58,000 को 0.16% से मल्टीप्लाई करो। 3,58,000 0.16 हाँ, परसेंट 572 मोर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 572 into 50,000 60,000 into 60,000, मतलब it is 34 lakh, sorry, 3 crore 43 lakh। Got it? Leaders got it? आप कहते हो ना एचएल, क्योंकि आपको अब एसएचएल बता दिया तो एसएचएल पे काम करते हैं, एंड आवर एचएल यूटिलाइजेशन इज ओनली 75%, बट ये एचएल भी यूज कर लिया होता हमने। ओके, कितना हुआ? 3.5 करोड़, राइट? नहीं भीष्मा, अब अगला पढ़ो। सुपर हॉटलीड का कितना है? 0.68, जनरल का 0.2, तो डिफरेंस कितना हुआ? 0.48%। 0.48, 42,000 को 0.48 से मल्टीप्लाई करो तो 201 कॉन्ट्रैक्ट इनटू 60,000। हाँ, तो ये भी 1 करोड़ 20 लाख, टोटल 5 करोड़। सुनील जी है? सुनील जी, राहुल दास सीनियर लीडर कॉल पे है? यस सर, यस सर, सुनील सर भी है। यस सर, मैं हूं, अभी तक का आईएएस थे ना शायद, ओवरऑल। ठीक है, आप समझे मेरा मतलब? राजीव सर, आप कुछ पूछ रहे थे, मैं हूं यहाँ पे किसी के मैं यही कह रहा हूँ, तो इसका मतलब जो मैंने अभी कैलकुलेशन बताया, अगर हमने ये सारी एचएल और सुपर एचएल भी यूज की होती, ठीक है, अब तो लीड स्कोर तो नई चीज आ गई है। 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 6 महीने कितना होता है? अगर ये 5 करोड़ 6 महीने में आया होता, आज हम एओपी 83 लाख रुपया एक्स्ट्रा आता 1 महीने में। सोचो हमारी परफॉर्मेंस कहां होती। आप समझ रहे हो? तो दैट्स व्हाई वी मेड दिस कॉल। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर नॉट डेटास कि आप मेल्स पढ़ते नहीं हो सारे। FLS, we are making your job easy. Managers, we are making your job easy. You are free whenever there are challenges to tell us. I already told with a star, there will be 15 to 20% deviation. Don't come sir, ये डाटा ये वाला लीड स्कोर कैसे बन गया, ये वाला डाटा एसएचएल कैसे बन गया। हाँ, ओवरऑल की प्रोसेस के अंदर जैसे भीष्मा ने बोला कि एफएलएस ज्यादा एचएल एसएचएल और लीड स्कोर यूज कर पाए, उसकी लिमिट कैसे रखनी है, उसमें क्या चेंजेस रखने हैं, ऐप में कैसे दिखेगा, वो चैलेंजेस ठीक है। प्लीज राजीव सर, 25% अगर चीजें खराब हैं, 25% हो सकता है कि लीकेज हो, कहीं प्रॉब्लम हो, लेकिन जो डेटा बता रहा है नीरज जी का और मुकेश जी का, डेटा से अब ये लोग इतना एफर्ट कर रहा है, लेकिन अगर सारे एफएलएस उसी सिस्टम पर और डेटा पर काम करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा और प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। जो 1-1, 2-2 सेल, 3-3 सेल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल भी डाल पाएंगे। तो सबको इफेक्टिवली काम करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैनेजमेंट अपना टाइम निकाल करके अपना प्रेस्टिजियस टाइम आपके साथ शेयर कर रहा है कि आप सीख लो। तो मीटिंग पर अटेंटिव रह करके मीटिंग समझिए, सुनिए, 1 घंटे में कुछ बर्बाद नहीं हो जाएगा आपका, बहुत चीजें सीखने को मिल रही हैं। बिल्कुल सर, इस मीटिंग में अभी यहाँ पर अभी इस मीटिंग में एफएलएस से लेकर सभी लोग, सब हायरार्कीज यहाँ पे मैंने बोला सभी है। तो सबके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप लोग ये मत सोचना, जितने भी यहाँ पर टीएल बैठे हुए हैं, क्योंकि टीएल का डायरेक्टली लिंक रहता है एफएलएस से, तो टीएल को हम ये जो डेटा बार बार दिखाने की कोशिश राजीव सर कर रहे हैं, नीरज सर कर रहे हैं, मुकेश सर कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आप अपनी 100% टीम से इसी फॉर्मेट में डेटा को यूज कराइए। आपका जितना, राजीव सर 83 लाख की बात कर रहे हैं, उस 83 लाख में आपका भी बिजनेस छुपा हुआ है और उस बिजनेस में आपका ही पार्ट है वो जो निकल के आएगा। तो आप सभी को उसको यूटिलाइज कराना ही पड़ेगा इस डेटा को, तभी आपकी ग्रोथ होगी। अपने पुराने तरीकों से आप बहुत ज्यादा माइलस्टोन अचीव नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इसको यूज करने से हम बहुत अच्छे माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज अपनी डायरी में मेंशन कर लो। Rahul, good. And last, now we are coming to the last topic, and we will then complete in 15-20 minutes. So one addition here, sir, Rajiv sir. We have added GST number in almost 10 lakh data in last 1 year. GST data is performing, so please keep your eye open.
if you are getting GST data where GST is mentioned, it is at least double the number of double the performance of general data, right? Yeah, good. Yeah. So we'll go to the third. Now, another thing, guys. Yeah. अब एक चीज क्या है, अभी हमने किसकी बात किया था, हमने आज अभी एक बार मैं रीपैप कर रहा हूँ यहाँ तक का, बिकॉज देन वी विल कम टू द लास्ट टॉपिक, ठीक है। वन, हमने ये बोला कि हमें क्वांटिटी बढ़ानी है, वो तो करना ही है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाने से सिर्फ नहीं होगा अगर आप राइट डेटा यूज नहीं कर रहे हो। तो दैट्स व्हाई वी टोल्ड यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लीड स्कोर, how the lead score is calculated, how you can allocate lead score data, what is the limits and everything, right? Then we talked about other than lead score, because all are overlapping things, high performing leads, whether it's SHL or HL or GST data or whatever, okay? So we talked about it, we told you it's based on your workings only, what is the lead contract ratio and where the bigger pie, and you can get faster and better results. As Neeraj said, we are helping. What data team is trying to do, they are trying to get your contracts faster and more, right? Number one. Now, अब आपने डेटा पे तो काम कर लिया, कस्टमर ने मीटिंग भी दे दिया, कस्टमर हैज गिवन यू मीटिंग आल्सो, और कस्टमर हैज गिवन यू वीडियो मीटिंग आल्सो, और कस्टमर हैज गिवन यू फील्ड मीटिंग आल्सो। अल्टीमेटली सेल कन्वर्ट कैसे होगा? कैसे होगा राहुल नरूला, कैसे होगा? एक बंदा ऑन हो जाओ, सिर्फ एक ही बंदा ऑन होना जिससे शॉर्ट ना बचे। राहुल, कोई भी, और भीष्मा आप हो जाओ, एक बंदा चाहिए मुझे सिर्फ। नीरज, कोई भी एक बंदा ऑन हो जाओ जी मीट पे। सर जब प्रेजेंटेशन अच्छी होगी हमारी। यस ठीक है, राइट। कर जब लिया, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। हाँ, जो अगर प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं होगी तो कन्वर्जन कैसे होगी? फॉर दैट what we have assumed, we have listened to calls, ऐसे नहीं, we have listened via bots, we have seen your proposals, we have seen everything, and after that we found out that every person is sending a different presentation saying different things, right? So that's why insights.tradeindia.com has been implemented after long months of working. This, how does it helps? It gives you all the data at one place. और अगर अभी भी कुछ और दिखाना चाहते हो वो तो आप दिखा ही सकते हो, जैसे पहले दिखा रहे थे, कोई मना थोड़ी ना कर रहा आपको की, ठीक है, बट उससे आपको सारा डेटा मिलता है। दूसरी चीज, अभी insight.tradeindia.com हम दिखाएंगे, कस्टमर वाइज, कैटेगरी वाइज डेटा सारा, कोई स्क्रीन नहीं खोलना, सब वहीं पे दिखेगा। नंबर एक, कॉम्पिटिशन डेटा एंड एवरीथिंग, बट देयर आर सर्टेन स्लाइड्स इन दैट we will not, Neeraj, we will not explain one by one slide, we will just tell what is this slide, okay? But there are certain slides which are all about creating background, that how the industry is moving, how the B2B is moving, how the competition is moving, and all those stuff. But don't worry that it's long. You can always skip that na, in your presentation. For example, if inside tradeindia.com has 24 slides, you can only present 5 now, you can skip it. You got the point? आप लोग ये नहीं समझते, nobody is saying that आपको inside tradeindia.com में वो सारा दिखाना ही है, right? तो मैं ये पहले क्लियर करना चाह रहा था। Now go forward, Neeraj. Okay. So this is what it is, your presentation. अच्छा, एक चीज, all FLS be very clear, all managers will be very clear. We will start getting reports, your direct leaders will start getting reports from today that who is using insights.tradeindia.com. I urge every single FLS or a team head to do presentation only via this. I'm extremely clear and I will be very strict on this. The number has to jump today like anything. Yeah, go ahead. So this is the link. If you click, this is how the presentation will start. There are 2-3 scenarios. If the profile, the person you are talking to already has a profile, वो जैसे अपना नंबर डालेगा, हम उसके प्रोफाइल में चले जाएंगे, and the entire presentation will be basis that profile. If suppose you have a new customer, you will have to enter the phone number here, verify it with OTP, and add some information. So I'm giving you two scenarios here. First, only for the first 2 slides, and then rest of the slide is same. This is my number, so I have put in my number here as a customer. यहाँ पे कस्टमर का नंबर डालना है, guys. You have to put the customer number. This thing as OTP.
This is the first slide. Presentation slide. Go. तो डक करना, अगर यॉर्कर मिले तो डिफेंस, और अगर फुल टॉस मिले तो बॉल सीधा स्टेडियम के बाहर। जैसे क्रिकेट में मैं राहुल एक सेकंड बस, वैसे राहुल यस सर जी। देखिए अब जैसे ये वाला आपका ऐड आया, ठीक है, आप कहते हो सर कस्टमर, सुनील जी जैसे कई बार कहते हो कस्टमर, अरे तो किसने कहा नेक्स्ट कर दो ना आप, आपको नहीं दिखाना तो नेक्स्ट कर दो ना। You can do next and go to the, आप समझ रहे हो ना, जो इम्पोर्टेंट है वही दिखाना है सर। Okay, so sir, अभी इस केस में you will find a name here Sanjay, because this profile was already created in Trade India. Now I'm just signing it out. Yeah. Okay, and मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा, मैं सीधा इस स्लाइड में आ गया। अगर एक कंडीशन है जहां पर एक कस्टमर नया है, हाउ विल द स्लाइड ओपन? आई विल जस्ट शो इट अगेन। ओके, एक नंबर आपको ये बता रहे हैं, वो सिनेरियोस बता रहे हैं, प्रेजेंटेशन तो सेम ही रहेगा। नाउ इज पुटिंग दिस इज अ न्यू कस्टमर। मुकेश ने एक नंबर डाला अपना। So here the slide changed, क्योंकि ये नया कस्टमर था, यहाँ पर ऊपर में आने लगा इसका प्रोडक्ट क्या है। हाँ, हाई गेस्ट, यहाँ पर हाई गेस्ट आने लगा। और सबसे पहले ये पूरा प्रेजेंटेशन जो है आपका, दिस प्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन योर कैटेगरी एंड योर प्रोडक्ट, कस्टमर्स कैटेगरी एंड कस्टमर्स प्रोडक्ट। So you will have to add some category here, add some product here, then only the system will start showing the presentation. ठीक है, 2 डाल दो बस। 3 डालना जरूरी है सर। हाँ 3 डाल दो, 3 जरूरी है। अच्छा हाँ, oil. So here, just a minute, okay. Here, just check the product we have added: surgical mask, sanitizer, and essential oil. Now the entire slide presentation will be based on this product only. कस्टमर के प्रोडक्ट के बेसिस पे वो उसके कंपटीशन को दिखाएगा, वो उसके इंक्वायरीज को दिखाएगा, वो उसके कीवर्ड को दिखाएगा, सब कुछ इसी के बेसिस पे हो, राइट? लेट्स गो अहेड। या संतोष सिंह, quickly because I don't want to take questions in between because first we want to go to present, but very quickly you tell. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोफाइल है उसमें गलत प्रोडक्ट डले हुए हैं, और तो अगर प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल सर, देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव एग्जिस्टिंग प्रोफाइल एंड यू आर सेइंग दैट रॉन्ग प्रोडक्ट्स आर देयर, how the system knows? System is doing presentation based on whatever is in the profile, then you first correct the profile and then start the presentation. तो यहाँ से मतलब प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं, राइट? नहीं, यहाँ से नहीं चेंज कर सकते आप, प्रोफाइल से चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल से ही चेंज कर सकते हो उसके। यहाँ से तो प्रेजेंटेशन विल स्टार्ट बेस्ड ऑन व्हाटएवर इज इन द प्रोफाइल, बट नीरज इज टेलिंग, जस्ट होल्ड ऑन, बट नीरज इज टेलिंग इन केस देयर इज अ न्यू डेटा which doesn't have profile, in that scenario how you will this presentation will go on, then you have to manually add minimum 3 products because it's a new customer, we don't have any profile, we don't have any information, but existing profile के products यहाँ से change नहीं कर सकते आप। सर तो उस टाइम पर फॉर एग्जांपल अगर प्रोफाइल है, अगर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो फिर मुश्किल होता है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोफाइल्स में कभी-कभी हमें ऐसा फेस करना होगा ना, मुश्किल होगा, कोई बात नहीं। तो अभी भी तो प्रोडक्ट में रॉन्ग प्रोफाइल, तो तब भी प्रेजेंटेशन देते ही हो ना, उसे मत देना उस केस में, क्या कर सकते हैं। मैं वही कंसर्न कर रहा था ओनली। तो जब आप पहली मीटिंग कर रहे हैं उस समय आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में पूछना होगा और प्रेजेंटेशन दिखाने के पहले उसको चेंज करवाना होगा। हाँ वही बोला मैंने, करना पड़ेगा वो। प्रेजेंटेशन इज नॉट द फर्स्ट दिस थिंग ना, डिस्पोजिशन मीटिंग। नीरज सर एक क्वेश्चन था यहाँ पर, जैसे सपोज नहीं अभी नहीं अर्पित, मैंने बोला अभी नहीं लेंगे क्वेश्चंस, अभी नहीं लेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। पहले दिखा देते हैं प्रेजेंटेशन। So like Rajiv in this presentation we are not explaining you, we are just telling you in what slide what is there. Yeah, so like Rajiv sir was saying, the first few this thing slides has detail, basically building up the scenario background as to how digital is happening, how digital is moving the world. So these are some of the slides which
if you want to show, you can show. If you do not want to show, you can skip. That is why the pagination is given below. Good companies, because the good customers, educated customers, they feel get, okay, he's not like a telecaller. He's just starting the presentation with, this is my package and please take this. First, he's creating that, okay, how the industry is moving, how the segments are moving, how the category is moving. It gets the impression that, oh, somebody is there which has a good presentation, because that you cannot create yourself. This is already created. If the customer is in a hurry, you can skip these, up to you. You keep pressing next. Yeah. Or once you start doing inside the TradeIndia.com for a longer time, 5 meetings, 6 presentations, 7 presentations, so Spencer, Bhishma, Neeraj, Sunilji, then people will understand. After first I have to directly go to 5th. After that I have to directly go to 8th. They will make their own sequence. Okay, yeah, go ahead. So this is an important slide where we are showing the growth, the monthly traffic trend of last 3 months of Trade India, and these are all jumping. Best slide. Because this is, we are telling about Trade India growth in the last 6 months. Growth. And this is in double-digit growth, month on month. This is app download. This is total inquiry increase in Trade India. This will impress your customer. Now this all will help you. Why? If it's a downloaded customer, then you can say, sir, you are talking about this 4 years back. Just see the 3-month trends. We are not same. Anything, because this will create that way. Yeah, go ahead. This is the main slide. This is the main slide. Where Guys, this is the main slide. 1 second, bas Neeraj, sorry. This is the main slide. Because all your presentation will happen from this slide, and you can click every block and you will go directly to that slide. You got the point? Aisa hi hai na, Neeraj? Yes, sir. Yes. So book your domain. How the benefits of domain by clicking one button. Access by Trade, you want to explain, click the second button. Popular product categories. I'll just show one by one, sir. I just want to tell them the process. Yeah. I know you will tell that. Okay, just hold on. Receive and check verified inquiries. You want to talk about, press the 4 button. Know your customer and you want to talk about the competitors, press the 5 button. Progress report you want to show in that category, you can press the 6 button. Digital presence on Trade India, you talk about, you press the 7 button. Download Trade India app, you can press the 8 button. Apply for business loan, you can talk from here itself. And find and appoint distributor, you want to talk about GD, press the 10 button. Everybody is here. Now Neeraj, go one by one. So like Rajiv sir was saying, these are 10 pointers and 10 screen will pop up when you are presenting to the customer. So entire 360-degree approach is here. So suppose like we added a surgical mask and essential oil are the product of this particular customer. I'm presenting. I'll say, sir, you can book your domain, your business domain from here. Just click here and you can show them the page. You do not have to remember the URLs for every customer, So you know that what you are presenting. Let's go to the second slide. Access and buy trade leads. So, sir, where will you access and buy trade leads from? Right now here, but if you become your distinct paid customer, you can get trade leads here. Whatever the way you communicate with your customer. So this page is open in front of you. Similar, we will not go to the details of the pages right now. Yeah. But any show all 10 tabs one by one. Right. That's what I'm going one by one. Enlist in popular product categories. How will you enlist your in popular product categories? Will be shown here. Immediately. Just a minute. Similarly, Similarly, receive and check verified inquiries. Where will you see this? You can show it here. I suppose you all have been showing this to your customer, but you have. But यहाँ पर आपको खाली click करके उस पेज पे चले जाना है. Similarly, like know your customer and competitor. I clicked here. Now, just imagine, इसने डाला था
आपने क्या कैटेगरी डाला था लास्ट में चेंज करके मुकेश? सर्जिकल टूल्स, ठीक है। तो आपको सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर सर्जिकल टूल्स का आएगा, मतलब वो 3 प्रोडक्ट या उस कस्टमर का जो 3 प्रोडक्ट होगा उसके बेसिस पे आएगा। और अगर यहाँ पे कोई भी आपका ना, जब अगर आप किसी भी प्रोफाइल का प्रेजेंटेशन देते हो और अगर आपको लगता है कि उस डाटा ऑफ दैट कैटेगरी इज नॉट कमिंग अप and some other categories come up, there could be bugs, you are open to explain me, but just go to know your customers ek baar aur, but just see, otherwise you always open new screen, you can here quickly say, जैसे for example यहाँ seafood आ रहा है, मुझे नहीं पता seafood का कैटेगरी है, गलत है तो you need to tell us, but for example you can clearly say sir total inquiries in this category in last 6 months, what are the competition, how many people are there for 1 year, 2 year, 3 year, 10 year, you can all show it from here itself. If the data is wrong, please tell us. You always please. So view your progress report. So we send this to our customer. You know, ये भी seafood उठा रहा है, वहां पर मुकेश को मुझे लग रहा है लिखने में कुछ ये हुई होगी प्रोडक्ट में, ये हर जगह अलग कर लो आप, ठीक है, उठा रहा है. So when you become our paid customer, this is the kind of information you get. Just see. Spencer, if you talk to a customer, sir, when you get our paid customer, you will get this kind of progress report. Will not his confidence bring, oh, sir, they will send us this kind of progress report? No, customer expecting same. You know? Come again? Customer also required this data to convince the client. This type of. Go ahead, Neeraj. Go ahead. So you can show them that this is the kind of information you will keep receiving from us, sir. If you become our paid lister, who's seeing, what is seeing, where are you kind of available, what kind of inquiries are coming in, from which city inquiry is coming in, tuna fish you are getting from Kolkata, you know. So all this information you can show to customer immediately. Digital presence on Trade India. How will you digitally available on Trade India? Okay. Otherwise you always open screens. How the industry leader look like, how you can show it from here itself. Yeah, go ahead. And then there are this thing like you download the app from here and this and that, you know, all this information. Yeah. Go ahead. You can tell them about business loan. You can tell them about GD, get distributor. So all information is there in one slide. Then comes the next slide as to product search result 2 and 3. You know, where is your product feature? What is the active product listing on Google Merchant Center? Is all available with a click of the mouse here. कर दो product search 1 click कर दो एक बार. ये देखो, you can show it from here itself. You can see Trade India here. You can show, sir, देखो how this happens. These are not basis your category of the customer. This is a static site where we are just showing it. This is not linked to the category. You need to show that you can also come here if your listings are right and right with price coming. You will put it. Right. Absolutely. It's just an example. And this will remain same. You know, this will not change basis customer category. This is just examples. If this product has right information, right price, it will feature on this thing with Trade India. See how many Trade Indias are there in search. Yeah, go ahead. Yeah. Then we have added what kind of catalog you can get. So we have added here certain catalog, this thing, samples. You know, got this it. is the catalog. What we are saying is you need not to go anywhere. From here, he says, how will my catalog will look like? You can show all the 5 samples from here itself, examples. Sir, this is how your catalog will be prepared. Which one you like it? And this will be connected to your this thing category or the product of the customer. Right? Go ahead. Okay. Then there are testimonials. You can, if the customer wants to see more testimonials, he can see it from here, clicking on this particular yellow ribbon. And then there are pretty more slides just to conclude your presentation. Right? We will talk about. You can show that how many MSME events we are doing, how many trade shows we are doing,
You got the point. So this all gives a holistic view of the organization to the customer to believe you. It's not just like, sir, give us 30,000 and we will just make a website for a catalog for you. Yeah, go ahead, keep going, just click it. Yeah. Then how do I check inquiries? How do I check? Whatever. Sir, next. This is view package. If you Go click here, click. Ultimately, after the package, what you will do, guys? This is most important. After doing the presentation, what you will do? You will go into pricing, na? Just see, just click man. Just show them super premium seller. No, premium seller. Sorry, TI premium seller. Go ahead, go down. Yeah, go down. This. Yeah, the shoulder. Now, what is the price here? 238,000 for 1 year. 1 year. Under new rates also. At what price you can give 3 year? 178. This is the benefit, na? Because now he will believe, oh, sir, actually their rate is 238,000 for 1 year, but you have a negotiation power till 178,000 for 3 years, and in this there are 6 keywords, and you can give it 11 keywords as per our given offers. So that's why we say that's your discount issue will never come up. Never come up. You got the point? Go back. Back? नहीं, back means वहीं पे वो जहाँ पे आखिरी slide पे. And this is the last slide, sir. Thank you. If you click on buy now, it will take you to the same slide again. Fine, ठीक है, अभी close कर देते हैं, बस. So guys, again, I think now you got to understand it. The most important in NC is, again, I am just saying, ensuring right data touch every day, ensuring fresh data touch every day, which is 3 fresh meeting for field FLS and 5 TeleDMUs, fresh TeleDMUs for fresh meeting for tele. After that, where you have to call is based on data tags, lead scores, HL, SHL. Use it blindly because that will increase your efficiency. And once you are able to meet a customer via video call or a field meeting, then use insights.tradindia.com to have a better presentation, have a better impact on the customer, so that your conversions is okay. So last thing, guys, do you think that this is beneficial, this training? We will do it more sessions, don't worry. Yes, sir, 500% डेफिनेटली बेनिफिशियल सर, डेफिनेटली. और बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, कस्टमर से बात करने के लिए लॉजिकल कंटेंट मिलेगा, प्लस लॉगिन करके दिखाना ही है, तभी आपका DMU लगेगा. अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपके जो यहाँ पे FLS है ना, बहुत सारे जो न्यू है या जो थोड़ा डरते हैं, which is okay, they are learning. I am talking to FLS guys. Why you need manager help? You know why? Because आपका मैनेजर ये सब चीजें अलग-अलग, your manager was able to show to the customer all these things by clicking different tabs on Trade India, but you are not confident because you don't know that. That's what we have done for you. Now you don't need your managers because everything we have given you. Are you getting it? What I'm trying to say? Charan, you need to understand this and tell trainers, because why FLS were feared, because they managers are still showing these things from somewhere else by opening 10 different tabs of Trade India, but FLS doesn't have such knowledge, but now this is available. Are you getting it? तो मैं यही बोल रहा था, कभी कभी हमें सेल आपका डबल आ जाएगा, ट्रिपल भी आ जाएगा. वी नीड टू स्पेंड टाइम, मैनेजर्स नीड टू स्पेंड द वे नीरज हैज टॉक्ड अबाउट लीड स्कोर प्रेजेंटेशन. दिस यू नीड टू डू विद दिस योर टीम every third day or a fourth day, and please track what is your consumption. You need reports, talk to Neeraj. Then you see your revenues will double, triple, 4 times, 5 times, 6 times. Not by okay, training a time sale pe lago. No, sale will happen with the right process, with the right data, with the right presentation. Okay, anybody want to add anything? नीरज जी, क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा. जब न्यू कस्टमर आप बोले ना, जब कैटेगरी के लिए 3 ऑप्शन है, सपोज वन कस्टमर इज डीलिंग ओनली 1 प्रोडक्ट, उसका 2 प्रोडक्ट नहीं है, वो कर सकते लॉगिन नहीं, इसका 3 प्रोडक्ट होना चाहिए. क्या बात है विश्वास जी, ऐसा होगा नहीं. एक सेकंड मैं एग्जांपल देता हूं ना, रुक जाओ ना.
बता, ऐसा कस्टमर बता जिसका प्रोडक्ट है, एक बता, कोई नाम बता, एग्जांपल दे कोई। नहीं, मैं एक एग्जांपल दूंगा, प्रोडक्ट का नाम देना, बोल ना, प्रोडक्ट का नाम बोल कोई भी। सी फूड में इसका कैटेगरी कुछ नहीं, सिर्फ सी फूड में यार, सी फूड में कैटेगरी हो गया, तुम इतने बड़े हो, सी फूड में सी फूड्स लगा देना, डाल नहीं है ना 3। सबसे बड़ा क्वेश्चन कंप्लेंट है, तो बाकी जो 2 कॉलम एम्प्टी है उसमें ओपन हो जाएगा ना, उसका मैंडेटरी कुछ लिखना पड़ेगा। नहीं तो बोल रहा हूँ ना, मैंडेटरी लिखना पड़ेगा, सी फूड के अंदर सी फूड्स लगा देना, सी स्पेस करके फूड लगा देना, क्या फर्क पड़ता है? ओके, सेकंड हो गया मेरा जो और कॉलम था, अगर इसका प्रोडक्ट नहीं है तो आप लोग सिस्टम से जाकर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम से क्यूआर चेंज करके सबको अलाउ नहीं है, क्योंकि हम लोग दैट मींस वो बैकएंड टीम को भेजेगा, फिर इसके बाद अपडेट होगा, उसके बाद जाकर वो प्रपोजल भेज सकते हैं कस्टमर। पॉइंट आप एक सेकंड मुकेश, आप ये भी पॉइंट लिख लेना आने वाले, बिकॉज़ इट विल टेक टाइम, वी विल ट्राई इट, लेकिन बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, 1 मिनट के लिए यार, आज के दिन भी तो सारी प्रेजेंटेशन अगर प्रोफाइल में इफ देयर इज अ रॉन्ग प्रोफाइल देते ही हो ना, क्या हो जाएगा? डाटा और फ्लो तो यही रहेगा ना दिखाने का। यार insight.tradenindia.me, यू डोंट गेट कंसर्न्ड कि वो डाटा कितना राइट आ रहा है। It's all about making an impact and doing the presentation with right flow. You talk about industry growth, you talk about Trade India growth, then you talk about what are we giving you, domain, catalog, how it looks, GMC, how it will look like, and all those stuffs, and then ultimately get into view packages. That's what I'm saying. Whenever you create anything, when we say, oh, I need a perfect one, doesn't matter, even if it's a wrong product, doesn't matter. आप कोई लिखित में थोड़ी ना दे रहे हो उसे कुछ। Are you getting my point, Viswal, what I'm trying to say? That's not a show blocker ना। आज तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे उसको, अभी फोन पे सामने जाके दिखाई नहीं रहे कुछ अच्छे तरीके से। Are you getting it? लेकिन आपने पॉइंट बोला, we will see, we need to see, because access का लॉजिक भी है उसका भी, that whether it can be done or not, we will also try to see. Sir, one point, Viswal ji. Idea of keeping those 3 product was, we could have kept 1 product also, was if you keep at least 3 product, chances of we showing the customer how the competitor is behaving, how the competitor is getting inquiry becomes higher. हो सकता है आपने एक सी फूड डाला, मान लीजिए सी फूड के साथ फिश डाल दिया खाली आपने, हमारे पास कोई फिश का कस्टमर नहीं हो पेड लिस्टर, तो मैं उसको दिखाऊंगा क्या? बट अगर आपने डाल दिया उसमें प्रॉन, फिश एंड सी फूड, और हमारे पास एक प्रॉन का है कस्टमर एक्सपोर्टर, तो आई कैन गो एंड द प्रेजेंटेशन विल शो एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रॉन टू योर कस्टमर। ठीक है, आई थिंक इस टॉपिक पे लंबा टाइम नहीं लगाते हैं, बिकॉज इतना बड़ा वो नहीं है। एनीवेज गाइस, दिस इज हेल्पफुल, मोर इंपॉर्टेंट, नो मोर क्वेश्चंस राइट नाउ, वी हैव टू फिनिश इट एंड स्टार्ट द डे। बट एक बार चैट पे लिख दो सब, यूट्यूब पे भी और यहाँ पे भी, एक बार के लिए जल्दी से। हाँ विनीत, करेंगे, इंटरनेशनल के लिए अलग बनाएंगे या चेक करेंगे, पता नहीं इंटरनेशनल में वर्क करता है क्या नीरज? नहीं किया सर, देखना नहीं करेगा, ओटीपी का चक्कर है सर उसमें। ठीक है, छोड़ दो, अभी कोई बात नहीं। ठीक है सर, अभी इसमें नंबर भी नहीं आता अपडेट करते। हाँ कोई बात नहीं सर, आएगा भी नहीं अभी। आप जब आप इंटरनेशनल बिजनेस को 40 लाख पे ले जाओगे, उसके बाद बात करेंगे आपसे। मिल गया आंसर? जितने लोग यहाँ पर हैं, खासतौर से एफएलएस जो सुन पा रहे होंगे मेरे को, बस आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा। राजीव सर ने एक वर्ड बोला था, शायद आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना। एक प्रेजेंटेशन जितनी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन होगा, उतना अच्छा आप सेल कर पाएंगे। सेल आता है कैलिबर और कैपेबिलिटी से, कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है और कितना कैलिबर आप रखते हो, किस लेवल की कैपेबिलिटी आपका। और कैपेबिलिटी और कैलिबर कहाँ से डिलीवर होता है? आपके टैलेंट और नॉलेज से। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, उतना जल्दी क्लाइंट कन्विंस होगा, उतना जल्दी आपके पास पेमेंट आएगा, उतना आप ग्रो करोगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बस यही मूल मंत्र समझना, आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अब एक चीज और है, लास्ट चीज, आई एम जस्ट एक सेकंड सर, विनीत ने भी जो क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, कई लोग हो सकता है जिस कॉल पे बैठे हो उसमें कस्टमर का डिफॉल्ट नंबर ना हो या एडेड ना हो, तो आपके लिए एक सजेशन है, अपना एक डमी प्रोफाइल अपने नंबर से बना लीजिए और कस्टमर के सामने बैठिए, तो अपने नंबर से लॉगिन करके उसको सारा स्टेटस दिखा सकते हैं। अभी आपने एक चीज बोली, जस्ट होल्ड ऑन, आई जस्ट वांट टू ऐड टू योर पॉइंट, व्हिच इज अ वेरी गुड पॉइंट।
Guys, what Praveen said. बिस्वाल आप ही के क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ. आप कह रहे हो एक ही प्रोडक्ट डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं. मैंने क्या बोला? डेटा डजंट मैटर. परवीन ने बोला अगर आपके पास कस्टमर का नंबर भी नहीं है तो यहाँ पे तो आप कस्टमर का डेटा नहीं दिखा रहे ना. मैं कह रहा हूँ कस्टमर की कैटेगरी भी मत दिखाओ, तब भी काम चल जाएगा. डजंट मैटर. यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द ट्रेड इंडिया कंसेप्ट. यू ऑल पीपल क्रिएट योर ओन प्रोफाइल एंड अपना ही नंबर डाल के उसको प्रेजेंटेशन देना है. डोंट गेट स्टक इनटू व्हाट द डेटा इज राइट और रॉन्ग. You are explaining Trade India, not necessarily his category only. It is exceptional, sir. नीरज जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, आप हाथ उठा रहे हो. ये मैं exceptional Rajiv sir, one point. Please do not. The purpose of presentation will nullify if we create our own distinct profile ID and we show everyone from that particular thing only, profile ID only. Because no, मेरा Neeraj, I changed my point. My purpose was, so Neeraj, sorry, I changed my point. Guys, मेरा purpose ये नहीं था कि you have to create your own profile and show it. I was trying to explain what Parveen was saying it. That purpose is to show the Trade India concept. डालना आपको कस्टमर का ही है, ठीक है. वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि फिर डेटा राइट नहीं आएगा. बट आई वाज ट्राइंग टू से दैट पहली बार डेटा राइट आएगा, और लेकिन मैं कह रहा हूं किसी जगह कोई बग भी हो सकता है जहां पे आपने कस्टमर का नंबर डाला है और डेटा राइट नहीं भी आ रहा है, तो डजंट मैटर. यू आर ट्राइंग टू शो हाउ इट्स हैपनिंग. मैंने ये इस केस में कहा, कई बार लड़के चले जाते हैं, कस्टमर का नंबर हमारे एसएफए में नहीं है, ओनली आरएम इज हैविंग द राइट टू ऐड द नंबर. तो इस केस में ऐसा नहीं कि मैं दिखा नहीं पाया, आप अपने नंबर से दिखा. इट इज मोस्ट एक्सेप्शनल. मतलब कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो वहां एटलीस्ट प्रेजेंटेशन देने का वे तो आपके पास है. I'm not saying. प्रवीण जी, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि इसके रिपोर्ट्स आप लोगों के पास आने शुरू होंगे. डन मैं समझ गया. मैंने एक्सेप्शनली बोला ना, एक्सेप्शनली. आपके किस एफएलएस ने कितने ये दिए हैं प्रेजेंटेशन, उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो अगर एक ही प्रेजेंटेशन को बार बार दिखा रहे हैं तो. डन मैं समझ गया. नंबर 1 ठीक है, नंबर 2 ठीक है. अभी गाइस आई थिंक होपफुली इट्स यूजफुल टू यू. So 2 important things: start using lead score, start using high performing data tags. This anyways we have been telling you earlier. Lead score is a new one which you start doing it. And insights.tradeindia.com, all presentations, whether in the field or whether it should start from this. Okay. And today is the 4th day to consume, because this is whole NC team and all managers are there. Okay. We didn't want to spend time in national meeting or something. Okay. You know how important is today. The 3 days are not good as per conditions. We have a big mission. We are all talking about 40 to 45% in week 1. 3 days are already gone. All BMs, all DRMs and all TH, please share your national plans on national group and start. And today all FLS, you are our strength, guys. We need you. I urge that every FLS go for minimum 2 contracts in week 1, and then we will win. Okay. And since 3 days have already gone, all FLS go for one first contract today. And whatever all FLS are there, hope you know that earning option is going on for week 1 for you on a contract basis. Okay. Okay. I think every manager have communicated to them. Okay. For less than 1 year, vintage FLS, you just need 1 contract of 25k plus GST or 30k plus GST. I think 30k plus GST, yes. And for greater than 1 year vintage, you need 2 contracts of 30k plus GST in week 1, and you will get 1,000 rupees per contract. Okay. This is extra over and above. Okay. And if you do 4 contracts, you will get 4,000 rupees. Okay. So please, every FLS qualify for that. And let's today, every FLS believe that we will do the right workings, use the right data, and do the right presentations via Insight. And all presentations have to be going forward through insight.india.com. Okay. So we have to close this. Best of luck. And managers, please share your plans and start your day. Okay. One point, sir. During the entire month, see, we keep on evaluating which particular tag is performing higher in that month. Keep checking your mails when we send those mails, because whatever insight we get from artificial intelligence team or the data team or from anyone, we try and pass it on to everyone, but what we get at the end of the month is people are not looking at those mail and working on those data. This is bad. Thank you. Chalo, best of luck, guys. Have a good day.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much for your guidance. Thank you, sir.